This is how it is. This is again very important. Natural history of disease. Many epidemiologists contributed towards generation of this. So this is a novel concept. Every disease has two phases, broad phases: pre-pathogenesis, pathogenesis. Pre-pathogenesis उस disease का वो सारा part है that happens before entry into the host human being से पहले पहले, ठीक है? As soon as the disease agent enters the human body, process of pathogenesis starts. ठीक हो गया, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसको वेरी वेल कि एक पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है ससेप्टेबिलिटी कि कैसे आया है, उसके बाद फिर उसका जिस तरह से आई थिंक नाउ आई एम बैक ओके, फिर उसके बाद से जिस तरह से उसका प्रोसेस हुआ इंक्यूबेशन पीरियड, देन द साइंस, देन द सिम्टम्स, देन एग्रेसिवनेस ऑफ द डिजीज, ठीक है। इधर आप देखो एक स्टेप लेडर इफेक्ट दिखाया हुआ, साइन सिम्टम्स that leads to illness. Illness, I have told you, when a person feels that he is not well, that leads to disability. Disability is the sickness. That person is not able to perform. Disability. That person is not able to perform a certain specific role. Defect. Sometimes when the person is not able to perform, that can lead to a permanent defect. For example, the loss of some anatomical structure, God forbid, or when the person is not able to walk, certain physiological function, that becomes a defect, fine. Then the chronic state of the disease, and the person can be cured completely out of it, or it can lead to death. So this is the course of the disease. These are the phases. Achha, why we are so much into, you might be thinking that this is known to everyone, that these are the phases of the disease. Why they are important? Because when we want to control the disease, when we want to halt the process of disease, we should be aware of these things. ठीक हो गया कि हमने किस किस जगह पे चेक लगाना है। अब ये आप देखिए, natural history of TB infection, ठीक है? We know very well that in most of the third world countries, including Pakistan, Mycobacterium tuberculosis is so much prevalent. ठीक है? आपके environment में बैक्टीरिया तो ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, और हमारी जो environment है, that is very much susceptible for it. Why? Closed, crowded places हैं, poor immune responses हैं, पुअर डाइटरी स्टेटस है, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनल प्रोटेक्शन लेवल है बहुत कम हो जाता है। वैक्सीनेशन स्टेटस हमारे यहाँ वैसे ही काफी ज्यादा कम रहता है। तो फिर हमारे आप देखो एक एक्सपोजर एजेंट है, ठीक है। शुरू में क्या है कि वो बैक्टीरिया जो है वो प्रोलिफरेट हो रहा है, ठीक हो गया। अब और बैक्टीरिया हैज, ये सारा आप पढ़ चुके हुए हो, वायरसेस, बैक्टीरिया, दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज to survive the unfavorable conditions, ठीक हो गया। वो कैसे उस environment में उस चीज को survive करते हैं। Sometimes वो वहाँ पे eliminate भी हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस, but most of the time they have this capacity, ठीक हो गया। Then sometimes it gets access to a human being. अब human beings में भी TB की infection में it's not necessary कि वो human body के अंदर गया and it starts expressing or manifesting as a disease. No, it might take years or decades ह्यूमन बॉडी की एंट्री के अंदर। जब कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस आया, कोई स्ट्रेस में बॉडी गई, तो दैट बैक्टीरिया गेट ए चांस टू मैनिफेस्ट, ठीक है। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड्स वाला फिनोमेना है, वो हम इसी कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अ लिटिल बिट मोर डिटेल कि भाई जब डिजीज एजेंट की एंट्री नहीं हुई है बॉडी के अंदर, लेकिन उसके जो फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं उसकी एंट्री को, ठीक है, वो सारे प्रेजेंट हैं। दैट इज द प्री पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज कब आएगी? जब एंट्री ऑफ दैट डिजीज एजेंट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फेज चलनी है, दैट इज नोन एज पैथोजेनेसिस। अच्छा, अब ये आपने एक कॉन्सेप्ट तो सारे कर लिया। A little bit, I think you people have done it in detail in your epidemiology of infectious disease, so I'm not going to stress more on it कि एजेंट क्या होता है, एजेंट्स की टाइप्स क्या हैं, होस्ट फैक्टर्स क्या क्या हैं। आई थिंक यू पीपल हैव डन इट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, एक जरा सी एडिशन, रिस्क फैक्टर।
Are these two terms synonyms? Risk factors and exposure या agent factor? Agent factor and risk factors are synonyms, not synonyms. A little bit different क्या है कि जब तो कोई agent किसी disease का clear cut feature बन जाता है, we know, we have ample evidence that this agent caused this disease. Mycobacterium tuberculosis causes tuberculosis. Fine? ये तो agent कहलाएगा. कोरोना वायरस causes COVID-19, ठीक है, ये तो एजेंट कहलाएगा. बट समटाइम्स देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके बारे में हम बिल्कुल हतमी तरीके से नहीं कह सकते कि ये फैक्टर होगा तो ये डिजीज हो जाएगी, ठीक है. उनको हम क्या कहते हैं? रिस्क फैक्टर. फॉर एग्जांपल स्ट्रेस. स्ट्रेस इज contributor in a number of diseases, communicable, not communicable, but we can't call it as a typical agent कि इस disease के लिए ये चीज लाजमी है, यानी कि हाइपरटेंशन उसी को होगी जिसने स्ट्रेस को सफर किया होगा. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. इट कैन इवन हैपन विदाउट इट. इन सारी चीजों को, या कोई ऐसी चीजें जो नहीं है, ठीक है, जैसे आप देखते हो अभी कोविड-19 आया, डिजीज की सिवियरिटी के बारे में बहुत से फीचर्स थे. कुछ लोगों ने कहा जी जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है, दैट इज प्लेइंग अ रोल. फिर आया कि इसके विटामिन डी डेफिशिएंसी के अलावा ब्लड ग्रुप्स का कुछ रोल है, इस किस्म की चीजें. सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिस्क फैक्टर्स. दीज आर नॉट द एजेंट. ठीक है, आपको ये जरा सा पता होना चाहिए. फिर रिस्क फैक्टर्स अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क ग्रुप्स. दिस इज अ वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट फॉर पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस. रिस्क ग्रुप्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने कोई इंटरवेंशन करनी होती है, जब हम किसी डिजीज को टारगेट करते हैं फॉर कंट्रोल और एलिमिनेशन और इरेडिकेशन, अभी मैं ये भी बताऊंगी कि ये क्या होता है. एक्सक्यूज मी. जब हम किसी डिजीज को टारगेट करते हैं तो वी ऑलवेज टारगेट द रिस्क ग्रुप्स. Risk groups basically वो groups होते हैं who are more susceptible in getting the disease or who are more susceptible in having the aggressiveness of the disease. And what are these groups? Old age, children and pregnant females. अच्छा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. दिस फोटो खाली उसकी एक इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, ये बताने के लिए कि डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, उनका जो नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज होता है दैट इज डिफरेंट. कुछ डिजीजेस का इंक्यूबेशन पीरियड या उनकी जो इनअपरेंट इन्फेक्शन होती है वो बहुत लंबी होती है. माइल्ड सिम्टम्स थोड़ी देर के, फिर एग्रेसिव सिम्टम्स और थोड़े से होते हैं जो फेटल डिजीज में जाते हैं. इन opposition to that, there are a few infection like rabies है कि जिसका incubation period छोटा सा और majority of the cases can get fatal. ठीक है, तो हर डिजीज का जो कोर्स होता है उसकी प्री पैथोजेनेसिस फेज और पैथोजेनेसिस फेज वो डिफरेंट होती है. Next concept is iceberg of disease. We all are very much aware of this phenomenon of iceberg. Okay, we know very well कि iceberg क्या होता है. Thanks to some iconic movie, as a result of which all of us are so very much aware. Iceberg is something in which there is just a tip is visible, but a huge big chunk of ice is submerged below the water level. Same is the phenomena for most of the diseases. कहा यह जाता है कि फिजिशियन की नजर में जो डिजीज आ रही होती है या कम्युनिटी की नजर में वो सिर्फ टिप है. अगर इतनी सी टिप विजिबल है तो यू कैन वेल इमेजिन कि इस डिजीज का बहुत बड़ा पोर्शन होगा दैट इज सबमर्ज्ड. ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर कोविड. जिस हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ तो टेस्टिंग लिमिटेड है, ठीक है, कि जितने अगर डेली के 5000 केसेस डायग्नोज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी के पैरेलल, इसी के प्रोपोर्शनेट बहुत ज्यादा ऐसे केसेस होंगे आइदर दे वुड बी एसिम्प्टोमेटिक बट हार्बरिंग द इन्फेक्शन, दे वुड बी हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, ठीक है, बट ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन, they would be having they would be having the disease but not being diagnosed properly, they would be diagnosed properly but not being treated properly. एक बहुत बड़ा चंक इस तरह से होगा जो कि submerged portion का होगा. And why is this iceberg phenomena is important? That when we are targeting towards the control or prevention of a disease, we should keep in our minds this phenomena. तो हम फिर उस सबमर्ज पोर्शन को जब तक टैकल नहीं करेंगे हमारी कंट्रोल एफर्ट्स कामयाब नहीं होंगे. ओके, नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स द concept of control. Okay, that when we want to control a disease, ठीक है, अब चाहे वो infectious disease है, चाहे वो non communicable disease है,
वी वांट टू कंट्रोल इट, वी वांट टू हॉल्ट इट। तो हम ये कैसे हमें पता चला, हमारे टारगेट्स क्या होंगे व्हेन वी वुड से कि भी अब ये डिजीज कंट्रोल हो रही है। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों कि एज वी जो पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दिस पैंडेमिक, हर दिन बहुत से लोगों की आदत है कि वो सुबह उठ के सोशल मीडिया पे ये डेली चेक करते हैं कि जी आज न्यू केसेस कितने आए, न्यू केसेस, ठीक है। एक तरफ लिखा होता है टोटल टोल ऑफ अ कंट्री, लाइक पाकिस्तान में अभी तक टोटल केसेस कितने हैं, हो चुके हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो क्योर हो चुके हैं, कुछ गॉट फेटल, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टिल इन द पूल, डिजीज पूल में। यहाँ से यू कैन हैव अ वेरी क्लियर कट एक्सेस, वो तमाम पेशेंट्स जो अभी तक पूल में हैं, ठीक है, जो कि पूल के अंदर आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर दी प्रेवलेंट केसेस, ये इस डिजीज की प्रेवलेंस है, ठीक हो गया। और जो ये डेली के न्यू केसेस आ रहे हैं ना, जो डेली का आप काउंट देखते हो कि 5000, 6000, 4000, this is the incidence of the disease. Incidence of disease means number of new cases of a disease coming. तो हमारा टारगेट क्या होता है कंट्रोल करने में, कि हम कब कहेंगे कि वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द डिजीज, जब उसका इंसिडेंस कम हो। जैसे अब जब हम कोविड को वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट बाय नंबर ऑफ मेथड्स, इम्यूनाइजेशंस भी हो रही हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, पब्लिक प्लेसेस को क्लोज कर रहे हैं, क्लोजर, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, रेंज ऑफ एक्टिविटीज। when will we get the idea that we are performing well? When the incidence will be cut, जो ये डेली नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं ना, जब इनमें कमी आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अगेन वो हमें इंडिकेट कैसे होगा, इंसिडेंस ऑफ डिजीज से। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने कंट्रोल की बात की, तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा था ना कि डिजीज, इलनेस और सिकनेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज 4 टर्म्स आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक हेल्थ फिजिशियन। एवरी पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड कि ये है क्या। कंट्रोल, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन एंड एक्सटिंक्शन। कंट्रोल इज समथिंग कि हमने एक चीज को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि वो जो एजेंट है, डिजीज एजेंट, वो एक खास लेवल से ज्यादा डिजीज कॉज नहीं कर रहा, जैसे कि अब कोविड-19 के मामले में हो रहा है। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आप देख रहे हो कि जो डेली केसेस हैं दे आर इवन लेस देन 100, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, डिजीज हैज बीन कंट्रोल्ड। हम ये नहीं कह सकते कि एलिमिनेट होगी या एरेडिकेट होगी, नो, डिजीज हैज बीन कंट्रोल्ड, कि भी वहां पे जो ये डिजीज की रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन है वो एक सर्टेन लिमिटेड लेवल पे आके रुक गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट शायद समवन ऑफ यू हु इज मोर वेरी मच इंट्रीग्ड बाय दीस फिनोमेना वो शायद पढ़ते हो, तो अक्सर जगहों पे एक आर वैल्यू दी होती है। आर वैल्यू थी वो वैल्यू है जो इंडिकेट करती है कि इन्फेक्शन आपकी सोसाइटी में किस रेट पे ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब कोविड-19 की ट्रांसमिसिबिलिटी आर वैल्यू पाकिस्तान में इस वक्त हाई है, जो डिपेक्ट करी है कि डिजीज की जो ट्रांसमिशन है दैट इज ऑफ अ हाई लेवल। तो अभी हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो पिछले महीने थे, यू कैन से लाइक जनवरी, फरवरी, व्हेन इट वाज अप टू अ सर्टेन, वी कुड हैव सेड दैट इट वाज to a certain limit and in certain regions it was under control, but I'm sorry currently to interrupt you. Pakistan mein Just it's not. 5 minutes left, man. Okay, thank you for the reminder. Thank you. Okay, so currently we are not able to control it, but some. The next level is elimination. Elimination is what? Reduction to zero of the incidence of a specific disease. अभी भी बहुत से countries ऐसे हैं जहाँ पे COVID का zero new case आ रहा है. Zero new case. जब ये situation आ जाए, when a country has a zero new case, this is referred to as elimination. आप इस चीज को पोलियो के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हो कि पोलियो जैसे बहुत से कंट्रीज में जीरो हुआ, पोलियो को इनिशियली पाकिस्तान जैसे भी कंट्रोल ही कर रहा है, ठीक है। 3 इयर्स तक अगर कोई न्यू केस नहीं आता, यानी कि हम एलिमिनेट कर लेते हैं वायरस को फॉर 3 इयर्स, तो वी वुड बी सेइंग कि हमने एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से, ठीक हो गया। जब जीरो न्यू केस हो, दैट सिचुएशन इज रेफर्ड टू एज एलिमिनेशन। नेक्स्ट फेज इज eradication. Eradication क्या है? Termination of all transmission of infection by extermination of infectious agent. आप ये कह देते हैं कि वो जो infectious agent है
अब वो आपकी सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में प्रेवलेंट ही नहीं है, प्रोलिफरेट ही नहीं कर रहा, ये चांस ही नहीं है कि वो ट्रांसमिशन हो। क्यों चांस नहीं है? बिकॉज इन्फेक्शियस एजेंट इज नो मोर देयर। ठीक हो गया? दिस इज रेफर टू एज इरेडिकेशन। एंड अप टिल नाउ only one disease has been eradicated from this earth, and that is the smallpox. सिर्फ स्मॉल, जो पोलियो है उसको भी एलिमिनेट ही किया गया, क्योंकि पोलियो वायरस अभी पाकिस्तान is contributing to it, and Afghanistan and Nigeria is even in the elimination phase. Pakistan and Afghanistan are contributing to it, तो वायरस तो दुनिया में फ्लरिश कर है, ठीक है? तो it is polio is not eradicated. Only disease which has been eradicated from the world is smallpox. कि smallpox का जो वायरस है वो दुनिया में इस वक्त कहीं पे भी वो फ्लरिश नहीं कर रहा, ठीक है? एंड अल्टीमेट स्टेज इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है कि भाई वो जो वायरस, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर इट इज, द इन्फेक्शियस एजेंट, वो नेचर में, आइदर एनवायरनमेंट में, आइदर लेबोरेटरी में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब ये क्यों हमने एक डेफिनेशन एक एक्स्ट्रा डाली है कि भी वो यूनिवर्स एक्सटिंक्ट हो गया, नापैद हो गया, फाइन। क्योंकि इरेडिकेशन में क्या है, लाइक स्मॉल पॉक्स, कहा यह जाता है कि स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शियस एजेंट को अभी भी developed world के पास, just a theory, I'm not sure about it, but it is said that in laboratory में भी वो exist करता है, ठीक है? And it can serve as a biological weapon in future as well. तो उसका वो, लेकिन अगर कोई लेबोरेटरी में भी चीज ना पाई जाए तो उसको हम कहेंगे एक्सटिंक्शन। कंट्रोल, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, एक्सटिंक्शन। कंट्रोल एक खास लेवल से ट्रांसमिशन नीचे आ जाए, एलिमिनेशन न्यू केसेस जीरो हो जाए, इरेडिकेशन इन्फेक्शियस एजेंट अब प्रोलिफरेट ही नहीं कर रहा, ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा, extinction when that infectious agent is not available in the nature or in the laboratory. Fine. These are the 4 definitions which you should know very well. अब बहुत important chunk जो बच्चों आगे है, अब I don't have time now because as I told you earlier that there was rather a bombardment of concepts. अब जो असल important चीज आनी है वो तो ये थी, primordial, primary, secondary and tertiary prevention. I know that you people have an idea of it in your tutorials as well as in infectious disease epidemiology lectures might be. But as this is the soul of this public health module, so I want to focus on it a little bit more. So अब आज तो नहीं, लेकिन next lecture में तो what I want you people to do is आप लोग एक दफा इसको रीड करके आओ. It is given in the park, very well given. एक दफा रीड कर लोगे, because what I want to do is कि मैं खाली इसको explain ना करूँ. I want to jot down a few examples कि उन examples को लिख के आप लोग उसको अप्लाई करो कि चीज के ऊपर प्राइमरी प्रिवेंशन होगी या सेकेंडरी होगी या टर्शियरी होगी, ठीक है? So this was what I wanted to do. We are just running out of time. I just want, up till now, I just want to summarize what we have done, that we have understood the process of concept of disease, illness, sickness. Then we did the theories of disease causation. What were those theories? Epidemiological triad, web of causation, multifactorial causation. And then we started off with the phenomena of control, okay? Control, elimination, eradication, extinction. And now in the next lecture, we would be doing the concept of prevention. Okay, bachcho, that was all for today. I wanted to touch the concept of prevention, but we are not able to